Hello everyone, welcome to APTI PLUS Academy for Civil Services. This is a special video on the Fortnight current affair, also known as FCA. So we are discussing for the FCA for the month of March. So this would be the first fortnight for the March, and in the series I'll be covering the entire news most comprehensively that is important. The 10 top news for the entire fortnight would be discussed. And the reference of the news has been taken from the Hindu, the Indian Express and the PIB. So this is going to be a comprehensive discussion. Right? So before I start, let's discuss what are the topic that I'll be discussing in the coming part. So these are the list of the topic. Like there are 10 topics. You can see the number of topics are there. Some important topic like vaccine passport, whether in the news, global Bioindia summit that was there, and that achievement from the India that is 53 PSLV flights. So these are some of the important topics. Entire 10 topic is important, and whatever news that we are discussing in the series tend to be very important, very comprehensive. So make sure you watch each and every news, right? So without any further delay, let's get started with the first news. New umbrella entities and payment ecosystem, right? As we have discussed this in our daily news analysis also. So the new umbrella entity would be again providing some of the retail payments in another league, right? So it would be achieving a target that is being envisioned by the RBI. So recently, the Reserve Bank of India has document setting that the framework for its plan to adopt and authorize the establishment of new umbrella entities. So NUEs की अगर बात करें, जितने भी रिटेल पेमेंट्स होंगे इंडिया में, उसके लिए आरबीआई ने एक स्पेशल डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाने की बात की है. Now, what is the rationale? What is the idea? How it has got the idea? So basically, it was mooted by the RBI to create an alternative mechanism of the existing National Payment Corporation of India. As of now, we have NPICA, who is taking care of all the payment activities, online activities that is being done in India, right? So this is the only body which take care of it. तो यहाँ पे खास करके जो वर्कलोड है एनपीसीआई की उसको कम करने के लिए द आरबीआई इज क्रिएटिंग एन एनयूई आल्सो नोन एज न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स, एक्सक्लूसिवली फॉर द रिटेल पेमेंट्स, राइट? सो दिस कैन बी अ वेरी पॉसिबल क्वेश्चन ऑन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल. नाउ कमिंग टू द एनयूईज, क्या एनयूईज हैं, इसमें किस तरह से चीज़ें काम की जाती है. दिस वॉज ऑलरेडी एनविसाज्ड बाय द आरबीआई. And talking about NUE, this is a non-profitable entity will be set up. This would be set up and it would manage and operate the new payment system, right? जितने भी retail payment system है उसको manage करेगी. कुछ अगर examples की बात करूँ, so that include ATMs, white label, POS, that is point of sales, and Aadhaar-based payment and remittances services. So these are the some important things that would be included under NUEs. Now, in addition, what more it can do, they can develop a new payment methods, standard and technologies जो कि operate करेगी settlement system में, right? So for any payment you made, there is a clearance and settlement system after which the final transaction is being done. So this is how NUE is going to function. Now talking about the eligibility criteria, so the only those entity owned by and controlled by the Indian citizen for at least 3 years of the experiences in the payment segment can become a promoter of NUE. So अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं या क्या क्राइटेरिया है to become a promoter of NUEs, so this would be the mandatory conditions. And there's one point of exception that the foreign investment is also allowed, right? So many a times UPT tends to guess that no foreign investment is allowed. So in this case, foreign investment is allowed, and as long as they comply with the existing guideline, but they have to adhere with the guideline that is being provided by the Reserve Bank of India. अगर वो Reserve Bank of India के guideline को पूरी नहीं करते हैं, so they would not be allowed to make any investments. Now डिमांड ऑफ एनयूज की अगर बात करें, जिस तरह से पेमेंट रिटेल पेमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं लाइक रिलायंस, दे आर कोलैबोरेटिंग विद फेसबुक, गूगल ऑन द जियो प्लेटफॉर्म. द अदर इज टाटा ग्रुप दैट इज वर्किंग विद HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, मास्टर कार्ड एंड भारती एयरटेल. Now the other being the important players like Amazon. The e-commerce में अगर सबसे बड़ी नाम है तो वो Amazon है. Followed they have tied with the Visa, ICICI Bank, Axis Bank, fintech startups and builders. And lastly, there is a SoftBank portfolio companies by Paytm and Ola. They have reportedly joined and applied for the NUEs. So these are the companies that are demanding that they can establish themselves as an NUE. Now, what is the need of NUE? If you see, I mean, if you're discussing the news, the comprehensive news analysis is very important. So you equally need to know what is the need, why we require this, right?
So first, the umbrella entity for providing the payment system in India, that is NPCI. This is only the sole authority dedicated to make the payments, which is again a non-profit entity. तो एनपीएसए के जो ऑपरेशंस है पेमेंट सेटलमेंट की, सच एज यूपीआई, एपीएस, रूपे, फास्टैग, ये सारी चीजें जितनी ट्रांजेक्शन्स होती है उसकी बैकएंड में एनपीसीआई काम करती है, राइट. नाउ प्लेयर्स इन द एनपीसीआई मेक एन इंडिकेशन कि जो बहुत सारे पिटफॉल्स हैं एनपीसीआई पे, एंड दिस इज द ओनली एंटिटी विच इज बर्डन विथ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, राइट. तो यहाँ से जो वर्कलोड है उसको कम करने के लिए आरबीआई ने ये प्लान किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेट की जाए, एक ऐसी अम्ब्रेला एंटिटी सेट की जाए that can provide the payment system and aim to expand the competitive landscape in this area. Now, if you talk about new umbrella entity that aims to get even bigger share in the digital payment sector, right? So we can see another level of advancement coming to the retail sectors. Now, the second news or the second topic is vaccine passport, right? This was again in the news, and this is again very important. So a vaccine passport, what is vaccine passport? This is an e-certificates जो कि स्टोर और रिकॉर्ड की जाती है कोविड-19 पेशेंट्स के जो स्टेटस हैं, either they have vaccinated or not vaccinated, it is there, right? So it can be kept in a smartphone or app, either in the digital forms, right? तो उसके जो फॉर्मेट्स है ऑलरेडी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, whenever you get vaccinated, if you're above 50, above 60, और इफ़ यू आर अबव 45 एंड योर कोमॉर्बिड कैटेगरीज, तो आपको वैक्सीनेशन गवर्नमेंट दे रही है, और उस वैक्सीनेशन के बाद, फाइनल वैक्सीनेशन के बाद, यू विल बी गेटिंग एन ई सर्टिफिकेट दैट यू हैव वैक्सीनेटेड, राइट. सो दैट इज गोइंग टू act as a vaccine passport. I'll tell you the utility of vaccine passport. What is the rationale behind this? We'll discuss that. Now, the idea was modeled and proof of the vaccination that several countries required even before the pandemic. बहुत सारे ऐसे countries हैं जिन्होंने डिमांड किया कि आपके लिए vaccination important है if you want to enter that particular country, right? So, traveler from Africa to the United States or India are required to submit the proof that they have been vaccinated against the disease for yellow fever as well. So, this is something the US has been demanding from the country like Africa and India. Now, Israel has become the first country to launch this, to introduce this certification system, which can allow the vaccinated individual to access the certain facilities and events, right? So this started from Israel, and this has become the first country. Now, version of international travel की बात करें तो जो एक international organization है, खास करके इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ऑल्सो नोन एज IATA, तो ये ट्रैवल्स पैसेंजर्स पास देती है. सो ये ग्लोबल बॉडी है जो कि रिप्रेजेंट करती है पूरे एयरलाइंस को, and they are developing an app called as IATA Travel Pass, which will provide airlines, aviation industry जितने हैं उसके जो भी स्टेक होल्डर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड की जाएगी टू चेक एंड प्रूव द वैक्सीनेशन एंड इट्स वैलिडिटी, राइट. So they would be integrating whatever data they have collected from the other countries, they would be integrating, और वो वहीं पे पैसेंजर को ट्रैवल पास के थ्रू स्कैन कर पाएंगे whether the individual passenger is vaccinated or not. Now there's one common pass, right? This is by non-profit common project, and they're trying to out with an app जहाँ पे common pass ऐप होगी जो पैसेंजर के वैक्सीनेशन रिकॉर्ड को भी बताएगी. So post vaccination there are many companies they are working on gathering data to ensure कि hassle free travel हो सके across the globe. Now some concerns regarding the vaccine passport, क्योंकि WHO ने कहा है कि this is not in the spirit of equality, right? क्योंकि जस्ट लोगों को वैक्सीनेशन मिली है, सिर्फ उनको ट्रैवल करने का मौका मिले, तो दिस इज अगेंस्ट द इक्वालिटी पोजिशंस, एंड इट विल लीड टू द एक्सक्लूजन ऑफ यंगर जनरेशन who would be last to be vaccinated. So this is what WHO has to say कि अगर जो ऐसे कंट्री में यंग पॉपुलेशन जाना चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है, तो उनके लिए रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है. एंड अगेन द अदर कंसर्न इज द प्राइवेसी कंसर्न, दैट बहुत सारे जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स है वो एक्सेस किए जाएंगे प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन के तौर पे, बट ये एक और चीज़ को मौका देगी जहाँ पे एन इंडिविजुअल कैन बी ट्रैक्ड बाय द अथॉरिटीज, देयर मूवमेंट कैन बी ट्रैक्ड, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द प्राइवेसी कंसर्न. एंड टॉकिंग अबाउट इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हैज कैटेगोरिकली सेड दैट प्राइवेसी इन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो जो प्राइवेसी इशूज़ है वहाँ पे एक बार तो आप इंडिविजुअल की वैक्सीनेशन स्टेटस देख रहे हैं, where he is traveling, you can track that as well. So this is something hindrance to the privacy policy. Now, Pradhanmantri Swasthya Suraksha Nidhi. This is again one of the important news that was reported and very important for the prelims examination. So, the Union Cabinet has approved Pradhanmantri Swasthya Suraksha Nidhi. एक ये सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड होगी जो कि फ्रॉम द हेल्थ
प्रोसीड्स एंड द हेल्थ एजुकेशन सेस से मेंटेन की जाएगी. सो जितने भी प्रोसीड्स होंगे हेल्थ और एजुकेशन सेक्स के, दैट आर लेविड अंडर 136B ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2007. नाउ व्हाट आर द सेलिएंट फीचर ऑफ PMSSN? अगर बात करें जितने भी प्रोसीड्स ऑफ शेयर होते हैं हेल्थ में, इन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेल वुड बी क्रिएटेड टू PMSSN, राइट. जितने भी हेल्थ और एजुकेशन के एसेट्स होंगे जो हम इकट्ठे होंगे, दे वुड बी गेटिंग इनटू द PMSSN. सो द एंटायर कलेक्शन वुड बी मेंटेन इन PMSSN. Now, if you talk about the accruals, no, that is in the PMSSN would be utilized for the flagship scheme. So, government ने ये कहा है कि जितने भी fund इसमें collect होंगे, there would be getting into the another program as well. तो कुछ important programs को highlight की गई है, like आयुष्मान भारत, जिसमें इसके पैसे utilize किए जाएंगे, इसके fund utilize किए जाएंगे. That again आयुष्मान भारत health and wellness centers, national health mission and प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, right? So these are the things upon which the entire fund, the education fund and the health cess would be utilized. So आप ये ध्यान रखें, जो दो cess है, education cess and health cess can be utilized in all these 4 programs of Government of India. Now administrative and maintenance of the Pradhanmantri Swasthya Suraksha Yojna would be entrusted with the Ministry of Health and Family Welfare. Now क्या क्या benefit होंगे PMSSN की? So it will enhance the access to universal and affordable healthcare through availability and earmarked resources. That would again ensure amount does not lapse and end in the financial year. और खास करके मैंने आपको बताया नॉन लैप्सेबल फंड है, तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखें. दिस इज नॉन लैप्सेबल फंड, राइट. Now, talking about the collection with the aims of addressing the education and healthcare, this need the rural families in India. जितने भी rural families हैं, खास करके rural India में जो infrastructure developments है, जो overall amenities provide करनी है उनको, this can be utilized through this fund. And in the budget 2018, the finance minister has announced Ayushman Bharat scheme that was announced to replace the existing 3% education cess by 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. तो पहले क्या हुआ करती थी, सिर्फ 3% की एजुकेशन सेस लगाया करती थी गवर्नमेंट, अब उसको 4% कर दिया गया है और उस 1% में एजुकेशन को भी, हेल्थ को भी इंक्लूड कर लिया गया है. सो यू कैन से कम्प्रीहेंसिवली दे आर चार्जिंग 4% बोथ फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन. सो टुगेदर आपको 4% देने होंगे. Now, ease of living and municipal performance index, right? This is again important. और जिस तरह से इंडेक्स की बात की जाए, UPSC tend to ask a single question or 2 question in the prelims examination. So recently, the Ministry of Housing and Urban Affairs have released the final ranking of Ease of Living Index 2020 and the Municipal Performance Index of 2020, right? So we'll discuss what are the cities that have performed well, क्या-क्या criteria थे, we'll see that also. So what is ease of living index? If we talk about ease of living index, it is an assessment tool that evaluate the quality of life. जो quality of life है वहाँ पे citizen की, और किस तरह से उसने impact किया है बहुत सारे अलग initiatives को urban development में. That is how the ease of living index is calculated. और ये जो इंडेक्स है comprehensive understanding देती है for the participating cities India based on the life, किस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इकोनॉमिक एवेबिलिटी ऑफ द सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एंड रिजिलियंस, राइट. तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. फर्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेकंड इज द इकोनॉमिक एबिलिटी ऑफ द सिटी एंड थर्ड इज द सस्टेनेबिलिटी एंड रिजिलियंस. Now, what is Municipal Performance Index? It is also important कि आप इस इंडेक्स को भी समझें, क्योंकि 2 इंडेक्स यहाँ पे है न्यूज़ में. So it has been launched by the accompaniment to the Ease of Living Index. इसको एक तरह से कंप्लीमेंट दे दिए है. जो डेडिकेटेड एम है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो एग्जामिन जो लोकल गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस हैं म्यूनिसिपैलिटी में, वो किस तरह के सर्विसेज दे रहे हैं, उनके फाइनेंसेस कैसे हैं, पॉलिसी कैसे हैं, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, हाउ दे आर एक्चुअली फंक्शनिंग, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह के जो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो इंडिया के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे खास करके रूरल जो गवर्नेंस है, जो रूरल म्यूनिसिपल बॉडीज़ है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया. And it also seeks to simplify and evaluate the complexities of the local government's practices that promotes the ethics of transparency and accountability. So अगर आपसे जनरल स्टडीज़ के पेपर 4 में एथिक्स में पूछा जाए, तो आप इस तरह की चीज़ों को कोट कर सकते हैं कि हाउ यू कैन परफॉर्म, हाउ यू कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, तो बाय 1 इंडेक्स. और अगेन यू कैन राइट दिस ऑन एसे एज वेल, राइट. तो मेक श्योर यू यूटिलाइज दिस 4 पॉइंट. कई बार आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट
पता होता है, बट यू कैन नॉट राइट, यू फॉरगेट टू राइट इन द पेपर. सो मेक श्योर अब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेपर में, मेंस के पेपर में लिख करके आए. नाउ क्या क्या पैरामीटर्स यूज किए गए थे? देयर वर द 5 वर्टिकल्स दैट वाज यूज्ड इन द एमपीआई, लाइक फर्स्ट इंक्लूड सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, technology and governance, and these 5 vertical comprises 20 sectors and 100 indicators in totality. Now अगर categories की बात करें for the assessment, so the assessment framework was MPA 2020 and has classified on the municipal based and their population. तो कुछ जो population million plus के populations है वहाँ पे municipality have been given a population, और एक category थी जहाँ पे population is less than 1 million. So these were the 2 categories of municipality that were segregated. Now talking about MPI 2020 performances, तो million plus category की अगर बात करें, so Indore is a city that has emerged as the highest rank of municipality, followed by Surat, Bhopal, right? और less than 1 million के category में Delhi Municipal Corporation NDMC जिसको कहते हैं, they have topped by Tirupati and Gandhinagar, followed by Tirupati and Gandhinagar. So first being Delhi Municipal Corporation, second being Tirupati Municipal Corporation, and third being the Gandhinagar Municipal Corporations, right? So these were the performance along the million plus category and less than million plus categories. Now you can see the best cities. This was rated in ease of living index. तो इंडिया के बेंगलुरु की बात करेंगे, you can see the top cities here, Delhi being 13th, and the top small cities, first is Shimla, second is Bhubaneswar, and the last is Trichipalli, right? So what you can do, you can take the screenshot of this infographic, this information that can help you. Now, Global Bioindia 2021, this was the summit that was being held from 1st to 3rd of March, and this calls for transforming life in the biosciences and bioeconomy, right? So recently, the Union Minister for Health and Family Welfare, they have inaugurated the second edition. So this was the second edition of the Global Bioindia, which was held in New Delhi through virtual mode. Amid the COVID-19 pandemic, everything is happening on the virtual mode. Everything is taking place in the virtual mode. So what it aims, जो पूरी initiative थी, जो पूरा summit था, Global Bioindia Summit, that aims to strengthen an opportunity for Indian biotechnology sector, खास करके national level पे, और जो global community है उसको कैसे cater कर सकते हैं, अपने level of advancement biotechnology में कैसे ला जा सकती है. So this is what the things that were discussed in the Global Bioindia Summit. Now what is Global Bioindia? एक मेगा इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, where each stakeholder, जहाँ पे international bodies, regulatory bodies, central government, state ministries, जो small and medium enterprises हैं, large industries हैं, bio clusters हैं, research institutes हैं, investors हैं, startup ecosystem है, ये सारे अपने views share करते हैं. These are the participants, these are the stakeholders. Now it's aimed to facilitate the recognition of India as an emerging innovation hub and biomanufacturing hub globally. Now India was ranked as 48 in the Global Innovation Index 2020. So if you talk about the ranking of India, it ranked 48, right? So this ranking can be important. अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, you can quote this type of things there. Now the entire objective of this initiative, the जो bio summit हुई थी, उसकी क्या objective थी? The first is to create a platform जहाँ पे एक new idea को evaluate किया जाए और उसमें जो investment है उसको बढ़ाया जाए. Now it showcase the identity, the key biotechnological innovations, चाहे वो products हो, services हो, technology from the national and international companies, startup, research institute, ये सारी चीज़ों को promote करने की कोशिश की जाए. Attracting major contracts from the international company as well as major global venture funding companies in India. And last is, according to the World Bank ease of doing business की अगर बात करें report 2020, तो India has now ranked first among the South Asian countries to compare on the 6th with the 2014. तो जो India की performance है among South Asian countries में वो first है ease of doing business में, जो पहले 2014 तक 6th रैंक पे हुआ करती थी. So in this we have improved and this is on the positive side. Now participatory organizations की बात करें तो Department of Biotechnology, Ministry of Earth and Sciences, Public Sector Undertaking, फिर बाक जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल जो है, इन सारी चीज़ों ने, उसके साथ CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एंड बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज, दैट इज एसोसिएशन फॉर biotechnology led enterprises, ABLE, right? So they were the participant organization for the summit, and ABLE is a non-profit pan-India's forum that represent Indian biotechnology sector in India. Now Freedom in Wild 2021, this was again the controversial news
controversial basically from the government side. They have criticized this, but for you as an aspirant of civil services, you equally need to approach this with neutrality, right? Now, according to the latest Freedom India 2021 report, the Freedom Houses, ये Freedom House जो है वो उसको लेकर के आती है. उनका कहना है कि जो इंडिया में freedom है that has reduced, and India's score was 67, a drop from 71 last year, right? तो 2019 के डेटा के हिसाब से इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत हद तक डाउनग्रेड हुई है फ्री कैटेगरी के लिस्ट में, राइट? Now, if you talk about the countries that have performed, you can see this is score for 20, yellow in color 2020, and the latest is 67. So India की performance यहाँ पे खराब हुई है. That is, no, we are as of now on the 67. Now you can see Bhutan, Sri Lanka, Nepal, Maldives, Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan. Now, political rights and civic liberties. So with this index, we come to know जो political right India में है, civil liberties है, that have worsened since 2014. और यहाँ पे decline हुई है after re-election के बाद भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ी है. 2019 के बाद से चीज़ें और worst शुरू होनी हुई, right? And the present government and in the state level alliances continue to crack down on the crisis during the elections. जो बहुत सारी critics थी वो भी ये कहते हैं कि जो state government है जहाँ पे present में जो BJP led government है, they are not doing well on the part of the freedom or giving citizen accountability charters, right? Now, India driving towards authoritarianism. बात की गई है जिस तरह से authority use की जा रही है citizen के through. This is something which China used to do. और इस तरह की चीज़ें जो authoritarianism है इंडिया में बहुत ज़्यादा शोकास्ट पहले कभी नहीं हुई थी जितनी अभी हो रही है. And highlighted the absurd use of security defamation, sedition, contempt of court laws, and quite critical media voices. So they have said बहुत सारे ऐसे डिफॉर्मेशन के केसेस हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी यूपा के जो केसेस हैं वो भी काफ़ी लोगों पे लगाए गए हैं, और जो सेडिशन के चार्जेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अब्रप्टली यूज़ किए जा रहे हैं. कोई रैशनल नहीं है इसको यूज़ करना, जिसको देखो उस पर सेडिशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं. दिस इज़ व्हाट द इंडेक्स हैज़ टू कोट. प्रैक्टिकली इफ यू कैन सी ये चीज़ें हुई हैं इंडिया में. Now, the report said that the ruling Hindu nationalist movement have encouraged the scapegoat to Muslim and disproportionately blame the spread of virus. और खास करके एक स्पेशल कम्युनिटी को भी टारगेट किया गया. They were involved in the spread of the virus. So this is something which hinders the essence and spirit of the democracy in the country. Now, moving ahead, this is Swachhta Saathi Fellowship, Waste to Wealth Mission. This is again by the Office of Principal Scientific Advisor, Government of India. So this was some of the important initiative that was taken by the Government of India. So Office of the Principal Scientific Advisor of Government of India under the Waste to Wealth mission, they have launched Swachhta Saathi Fellowship, right? How this fellowship is going to help people and how this is going to build in India, right? So what about this fellowship you want to know? It aimed to recognize the student, community work, self-help group and the municipal sanitary worker who are engaged in ट्रैकिंग द एनॉर्मस चैलेंजेस जो कि वेस्ट मैनेजमेंट पे हो, साइंटिफिकली और सस्टेनेबिलिटी कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है, एंड व्हाट आर द इफेक्टिव मेजर्स दैट कैन बी टेकन, राइट? Now there are three categories upon which the award would be there in the fellowship. The category 1 called for open to school student from 9 to 12th standard engage in the waste management community work. ऐसे students open school में ना, open to school 9 से 12th class के जो बच्चे हों उनके लिए. The second category is open to college student जो कि अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, रिसर्च स्टूडेंट हो, वो किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट में कम्युनिटी वर्क के लिए काम कर रहे हैं. And the third category is open to citizen working in the community through the self-help group जो SSG है उनके थ्रू in municipal or sanitary worker beyond the specific and their job requirement and descriptions, right? Now waste to wealth mission की अगर बात करें, so this would identify, develop and deploy technology to treat the waste and generate energy, recycle material or exist worth. अगर बात करें waste to waste की, जो waste to wealth mission है, this is one of the 9th mission of the Prime Minister Scientific Technology Innovation Council (PM) STAC के अंदर आती है. And this mission assists and augment the Swachh Bharat and Smart City project. तो जो गवर्नमेंट की ऑलरेडी पहले पॉलिसीज़ हैं उसके साथ इंट्रीग्रेट करने की कोशिश की गई है टू क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, फाइनेंशियली वाइबल एंड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रीमलाइन, राइट? और अगर आप ई वेस्ट की बात करें, सो दिस वाज अगेन द न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड बाय द IIT Delhi, and this type of mission is again very important to promote the overall sanitation, the good sanitation in the country, and at the same time it would bring a good governance in the country as well.
Now, Maritime India Summit 2021. This can be a possible question in the prelims examination. So this summit was being organized by the Ministry of Port and Waterways, and this led the entire scheme the summit aims to develop 7,561 kilometer coastline along that has to be undertaken, right? So India has set a target that they would be completing this one 7,560 kilometer long coastal areas. Now, if you talk about India, where investment is around $82 billion in the ports by 2035, this is what the expectation coming under the Sagarmala project, जहाँ पे renewable energy, maritime sectors को develop करने की बात की गई है. At the end, it would definitely boost the tourism around the lighthouses. Now, India aims to operate 23 waterways by 2030, right? सो बाय 2030 जितने वाटरवेज हैं और उसमें 23 वाटरवेज को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा. सो दिस इज व्हाट द टारगेट हैड बीन सेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, एंड दस द फोकस एरिया ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एम टू स्ट्रेंथन द वर्जन ऑफ आत्मनिर्भर भारत. नाउ करंट स्टेटस ऑफ इंडियन पोर्ट की अगर बात करें तो इंडिया हैज 12 मेजर पोर्ट्स एंड सेवरल माइनर पोर्ट अलोंग द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट. जो जितने भी कोस्टल एरिया है वो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे और वेस्टर्न कोस्ट पे ही है, राइट? Now the capacity of major ports have increased from 870 metric ton जो 2014 में थी to 1550 million ton in 2020, right? So this has increased. You can see the number. और if you talk about the India ports, जो ports हैं जितने overall, उनकी जो measure हैं वो direct ports हैं, direct port entry है, that means upgraded to port community system for easy data flow, right? So technology advancement is also coming in the cargo sector that will help reducing the time of inbound and outbound cargos, right? So this is something that is happening as of now, and government ने भी 2030 तक के लिए बहुत सारी चीज़ों को streamline करने की कोशिश की है. Now, what is the significance of this summit? This will help the growth of maritime sector and promote India as a leading blue economy in the world. As we know, government of India is also focusing to create a blue economy for India. And further, the Maritime India Vision 2030 is something that would be on the target of the government that they want to achieve through it. Now, 53 PSLB flight. This is again very important for your prelims examination. साइंस एंड टेक के पोर्शन में या करंट अफेयर के पोर्शन में आपसे इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं. Now, recently, 53rd flight of the PSLV, that is known as C51, marked the first dedicated mission जहाँ पे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL कमर्शियल आर्म है इसरो की जिसने इसको पूरा ऑपरेशनलाइज किया. एंड इन द फ्लाइट इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड ब्राजील की जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, उसके अलावा अमेजोनिया और 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स जो होती हैं जो दूसरे कंट्री की सैटेलाइट को भी लॉन्च की जाती है. तो इंडिया की तरफ से 5 और यूएस की तरफ से 13 को पैसेंजर सैटेलाइट है. दिस वाज बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा. Now, अगर SAR की बात करें, so SAR is a Sriharikota and Spaceport of India. It is like responsible for providing the launch base and infrastructure for the Indian space program, right? Now, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इस तरह के इनिशिएटिव के या जो गवर्नमेंट CL53 जो लॉन्च की गई है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग रिमोट सेंसिंग डेटा. जितने भी रिमोट सेंसिंग डेटा है उसको यूजर्स के मॉनिटरिंग में, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन की बात हो अमेजॉन रीजन पे या फिर एनालाइजिंग द डाइवर्स एग्रीकल्चर अक्रॉस द ब्राजीलियन टेरिटरी. Now, this project would also help in identify the suspicious ship through the satellite imaging. So, forest में भी help करेगी, Brazilian territory को help करेगी identify suspicious ships जो कि satellite imaging में track नहीं हो पाते. So, these are the advancement coming from the satellites. Now, significance, it provide impetus to Indo-Brazil relationship. Since 2000, India and Brazil have signified creative instrument for exploration and peaceful of the outer both government level. जहाँ पे इसरो ने ब्राज़ीलियन जो स्पेस एजेंसी उनके साथ भी कोलैबोरेट किया था. और जो नई सैटेलाइट यूज़ की गई है अमेजोनिया 1 वुड ओपन डोर फॉर द मल्टीपल बिजनेस जहाँ पे ट्रेड गवर्नमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. और ब्राज़ील ने रिक्वेस्ट किया कि इंडिया की जो सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट मटेरियल सिस्टम फॉर इट्स लॉन्च फॉर द व्हीकल प्रोग्राम, राइट? सो इंडिया इज असिस्टिंग अदर कंट्रीज ऑल्सो इन लॉन्चिंग देयर सैटेलाइट, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस. Now, cyber voluntary program. This was again one of the important initiatives taken by government and very possible questions for the prelims examination. So the Ministry of Home Affairs had informed लोक सभा कि उन्होंने जो साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया है टू प्रमोट साइबर हाइजीनिक प्रमोशंस, राइट? तो आपसे जनरल स्टडीज पेपर 3 में एनालिसिस पॉइंट से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं.
Now, the service of voluntary program can be utilized by the state as per requirement. तो ये volunteers होंगे, जैसे NDRF की टीम होती है, volunteers होते हैं, वैसे यहाँ पे cyber volunteers होंगे जो कि state के demand पे accordingly काम करेंगे. Now, the MHA through the cyber crime grievances portal, which is cybercrime.gov.in, that aims to raise a group of cyber crime volunteers to flag the अनलॉफुल कंटेंट. जितने भी अनलॉफुल कंटेंट है उसको वो कैरेक्टराइज करेंगे एंड अकॉर्डिंगली दे विल सेट. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस, मैंने अपने डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपको अनलॉफुल कंटेंट क्या है उनके बारे में बताया था. इफ यू नॉट वॉच दैट वीडियो, मेक श्योर आप उस दिन की जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है उनको देख लें. Now, concerns over the program, the various group including the Internet Freedom Foundations have expressed the concern over the program because ये इसके मुताबिक जो international organization they say this is something that would create a surveillance and create potential social distrust, right, and encouraging civilian to report and online activities to other citizen. So कहीं ना कहीं retaliation में कोई एक दूसरे की तरफ या फिर बदले के लिए भाव से भी कोई इस तरह से इसकी misuse कर सकता है. Now, cyber crime voluntary framework की अगर बात करें, so the cyber crime voluntary framework has been rolled out as an initiative and a part of cyber hygiene promotions to bring citizen contribute to fight against the cyber crime, right? और खास करके स्टेट और जितने भी यूनियन टेरिटरीज के इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो एंडेवर करेगी कि साइबर क्राइम्स को कम किया जाए. Now, the challenges of cyber spaces are again many, जहाँ पे vast broadness character भी होती है, and the volunteer would be rolled and their services utilized by the respective state and union जो UT authorities है that would be required to avail the facilities by the cyber volunteers. Now, National Cyber Crime Reporting Portal, गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट पे यू कैन ऑल्सो विजिट, एंड दे ऑपरेशनलाइज द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल फ्रॉम August 13, 2019. They have provided this centralized mechanism to citizen to file an online reporting of the cases if there is any cyber crime reported. And this would again engage the people. अगर साइबर क्राइम की अगर बात करें, so special focus रखी गई है where the women and children can participate, and if any cyber crime has happened against them, they can lodge a complaint in this portal. And as per the data maintained, inceptions के बाद ही 3,17,439 साइबर क्राइम के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, और उसमें 5,711 FIR has been registered from February in this country. This is for latest, ये current की 2021 की data है. So this is all about the national cyber crime reporting, and I have discussed almost all 10 news that were comprehensively important and that can be very significant on your essay, mains and prelims paper, right? And if you're new to our channel, do not forget to subscribe APTI PLUS Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, if you find this video to be helpful, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. We'll meet in the next FCA 2 for the Fortnight that would be released very soon on the coming other Sunday, right? So for time being, if you have any other concern, you can write to us in the comment section. So thank you so much for listening.